Hello everyone, welcome to the class. Welcome to another session on parasitology. So today we are going to discuss trematodes. हम trematodes के बारे में आज बात करेंगे. ठीक है, तो trematodes what are they? They are the flukes. इनको flukes भी कहा जाता है. ठीक है, first directly we will go to the infective form. What is the infective form of trematodes? That is Metasarcaria larva. ठीक है, in all the trematodes the आपका infective form is the Metasarcaria larva except for the Schistosoma. Schistosoma में क्या होता है? It is Sarcaria larva. ठीक है, so two things you have to remember. Metasarcaria, all the trematodes, and Sarcaria in Schistosoma. So S and C are phonetically similar. SC, so you can remember SC. Schistosoma, Sarcaria. ठीक है, fine. Let's see the next slide. Now, after infective form, we will learn about the host. So the definitive host for the trematodes are man. ठीक है, intermediate host क्या होता है? Intermediate host is two types of intermediate host, first and second. First is snail and second it may vary from species to species. Okay, मतलब अलग अलग trematodes में अलग अलग हो सकता है second वाला. But first man definitive host and your first intermediate host are same. Definitive host is man, first intermediate host is snail. ठीक है, now mode of transmission. तो इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो इंजेक्शन से होता है. ठीक है, इंजेक्शन ऑफ contaminated food and water इंजेक्शन से होता है. पर जो सिस्टोसोमा है उसका अलग से होता है. इट हैपेंस थ्रू स्किन. ठीक है, थ्रू स्किन. इंजेक्शन से होता है all trematodes. Their infection through ingestion of the larva and all, through all trematodes through ingestion except Schistosoma through skin. ठीक है, now next आपका next क्या है? Just a minute, if I can put back. No, not possible. So next है, now we'll learn what are the organisms included in trematodes. So organisms, first is Schistosoma. ठीक है, second is Fasciola hepatica. Hepatica means liver. ठीक है, hepat means liver, so this is known as liver fluke. ठीक है, Schistosoma is also known as blood fluke. Then number 3 is Paragonimus westermani. ठीक है, this is lung fluke. You can remember this is found in Manipur. ठीक है, then next we have got Pronob and Opis torches. One is left out, that is intestinal fluke. That is Fasciola bascae. That is intestinal fluke. So these are the 5 species we are going to study now. Okay, so we will study about the different hosts of all the different species first. So we'll write down in a sequence here Schistosoma. Okay, definitive host, first intermediate host,
first intermediate host, just a minute, first intermediate host and second intermediate host, ठीक है। तो सिस्टोसोमा लिख दिया हमने, फिर क्या आएगा, फिशुला हेपाटिका, पैरागोनिमस वेस्टरमेनी, and then Fistula bascae and Clonorchis opisthorchis, ठीक है। तो just a minute. So first we will write down Schistosoma लिख दिया है मैंने, then Clonorchis, opisthorchis, ठीक है, then Paragonimus, Fistula hepatica and Fistula bascae, ठीक है। तो डेफिनेटिव होस्ट और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट आर सेम इन ऑल, ठीक है। दिस इज डेफिनेटिव होस्ट इज मैन एंड दिस इज फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल, ठीक है। तो दिस इज कॉमन इन ऑल, आपका सब में कॉमन है, बट सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट वेरीज, ठीक है। तो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट सिस्टोसोमा में इज नॉट प्रेजेंट, कोई होता ही नहीं है सिस्टोसोमा में, ठीक है। क्लोनोर्चिस ओपिस्थोर्चिस में क्या होता है, आपका फिश होता है। तो क्लोनर, रिमेंबर इट लाइक दिस, क्लोनर फिश, ओपिस्थोर फिश, तो इसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है फिश, ठीक है। पैरागोनिमस वेस्टरमेनी, इसका क्या है, क्रैब और क्रे फिश। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पारा और केरा, crab, some part of India they called it kera also, so para और crab, ठीक है। तो you can remember it like that। Fistula hepatica में क्या होता है, F for, ये दोनों F है ना, तो इसमें होगा fresh aquatic vegetations। I hope you can remember this, it's not tough। Schistosoma, no second intermediate host is present, Clonorchis, clonorfish, Paragonimus, crab, para, kera, crayfish, then Fistula hepatica, Fistula bascae, fresh aquatic vegetations, ठीक है। Now we will be discussing in detail about Schistosoma। तो Schistosoma तीन प्रकार का होता है, एक है हेमाटोबियम, एक है मानसोनी, एक है जापोनिकम, ठीक है। तो what is the most important thing about Schistosoma, कि इसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, होस्ट इज नॉट प्रेजेंट, एंड व्हाट एल्स, जो एग है दैट इज इट शोज इट इज स्पाइनस, स्पाइन होता है एग्स में, ठीक है। लेटरल स्पाइन, टर्मिनल स्पाइन, ये सब होता है इसमें, ठीक है। इट्स नॉट ओपर्कुलेटेड एग, ठीक है। और ये डायोशियस होता है, डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। इन अदर्स व्हाट हैपन, इन अदर आपका क्या, ट्रेमाटोड्स, मेल एंड फीमेल आर in the same, they are hermaphrodite, but in case of Schistosoma they are different, ठीक है। male and female are different। so see, this is Schistosoma mansoni, this is lateral spine, ये देखो lateral spine, lateral side पे है ना, this is mansoni lateral spine, this is hematobium, इसका terminal spine, ठीक है। टर्मिनल, द स्पाइन इज टर्मिनल, दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। इट हैज ए नॉब होता है इसमें, दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अंटिल टोल्ड अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑल, ठीक है। तो लेटरल स्पाइन, टर्मिनल स्पाइन, एंड दिस इज जापोनिकम। So this is one more pic I would like to show, yeah, this is the life cycle of this Fistula hepatica।
might not have kept the slide for this your okay, I have not kept the slide, I guess, or yeah, it is here, left it before. So see, this is Mansoni japonicum hematobium. ये dioecious होता है. Paired adult worms migrate to mesenteric venous plexus. हाँ, ये याद रखो, venous plexus. So the infection is caused in the venous plexus. ठीक है. So this you have to remember that dioecious होता है. This pic you need to remember. ठीक है. And snails तो हमको पता ही है. And this you have to remember. This pic you have to remember that the Cercaria larva is fork tail. Fork tail मतलब देखो यहाँ पे fork tail ऐसे है ना. This is known as fork tail. ठीक है. So this is about one thing left. In all the, I told you metacercaria होता है in all the trematodes except Schistosoma, जिसमें आपको क्या होता है, Cercaria larva होता है. ठीक है. So now let's look at the infection caused by it. It resides in the for hematobium, it resides in the vesicle and pelvic region. ठीक है. And this Mansoni and japonicum, it is found in, Mansoni is found in sigmoidorectal region, and it is japonicum is found in ileocecal region. ठीक है. And the vein involved is mesenteric vein. Now let's see the clinical features associated with each of them. Excuse me. Clinical features. So हेमाटोबियम में क्या होता है, it shows hematuria, hydronephrosis, and cancer, CA, that is squamous cell cancer of urinary bladder. तो इसमें transitional cancer भी होता है, but that squamous cell carcinoma is more than transitional cell carcinoma. ठीक है. तो this is about हेमाटोबियम. हेमाटोबियम में क्या होता है, हेमाटूरिया होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन ट्रांसिशनल वो होता है. ठीक है. देन मानसोनी में क्या होता है, मानसोनी एंड जापोनिकम. मानसोनी में क्या होता है, स्विमर्स इच होता है, स्विमर्स इच. द रेस्ट आर सेम. एक्यूट सिस्टोसोमियासिस, इसको काटायामा फीवर भी बोलते हैं, काटायामा फीवर, दैट इज सेरम सिकनेस लाइक इलनेस. ठीक है. काटायामा फीवर. एंड देन क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस क्या होता है, ग्रेनुलोमा होता है, and it causes in the intestine, liver and lung. Okay. So this you have to remember, काटायामा फीवर. ये मानसोनी और जापोनिकम दोनों कोज करता है, मानसोनी और जापोनिकम both causes काटायामा fever. Okay. Fine. Now let's see something more. Now we will talk about pipe stem fibrosis. Pipe stem fibrosis is seen in the liver. ठीक है. तो पाइप स्टेम फाइब्रोसिस कहाँ पे है, लिवर में. तो दिस इज cut surface of liver from a case of hepatosplenic
Schistosomiasis. The whitish fibrous tissue forms plaques that enlarges the portal spaces. The liver parenchyma appears ये जो है, this you can see, this is known as pipe stem fibrosis. It is in the liver. Okay, pipe stem fibrosis, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. पाइप स्टेम फाइब्रोसिस कहाँ पे देखते हैं हम? ठीक है, सिस्टोसोमियासिस में देखते हैं. दिस इज पाइप स्टेम फाइब्रोसिस. ठीक है, एक्स के बारे में बता दिया. आपका जो this one we could not identify. This is because this has rudimentary spine. The spine is not very much visible, that's why it is called as rudimentary spine. ठीक है, this is lateral spine and this is terminal spine. Now we will be talking about fasciola hepatica. fasciola hepatica. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? शिप और लिवर फ्लूक. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट लिवर फ्लूक. ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट क्या है इसमें? मैन है, फर्स्ट है स्नेल, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल, सेकेंड इंटरमीडिएट फ्रेश एक्वाटिक वेजिटेशन, F फॉर F एक्वाटिक वेजिटेशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंजेक्शन. हमने बताया था ओनली स्किन इज इन्वॉल्व्ड इन Schistosoma. An infective form is मेटासार्केरिया. सार्केरिया किस में होता है? Schistosoma में सार्केरिया होता है. ठीक है, now let's see some more things about this. The adults are hermaphrodites. That means the sexes are present on the same जो एक वो है उसमें होता है. Sexes, both the sexes are present together. Sexes are not present in two different ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में, in one organism both the sexes are present. ठीक है, एक्स क्या होता है? हमने शिस्टोसोमा में पढ़ा था they had spine, but in case of this we have operculated egg. operculum मतलब एक operculum होता है, लीड होता है. so ये एग है, तो दिस इज ए लीड होता है, इसको operculum बोलते हैं. sorry, my throat is little bit choked up. Fine. Now let's see about the life cycle. So see, I'll show you another picture. See, this is an operculated egg of fasciola hepatica. Operculated egg of fasciola hepatica. ठीक है, इसको operculated egg बोलते हैं. This is paragoma. तो इसमें क्या होता है? शिप इज द आपका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है. अदर एनिमल्स कैन ऑल्सो बी देयर, बट सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इज शिप. ठीक है, ये आपको याद रखना है. मिराकार्डियम लार्वा लाइफ साइकिल इन स्नेल तो होता है प्राइमरी, देन इन लाइफ साइकिल इन शिप. ठीक है, एंड सेकेंडरी होता है आपका फ्रेश एक्वाटिक वेजिटेशन. ठीक है, fasciola hepatica हो गया. something about fasciola bascae. fasciola bascae is the largest trematode. ठीक है, largest trematode. so bascae B for bulky. we can remember it like that it is a bulky one. ठीक है, so fine, we are done with fasciola also, fasciola hepatica and fasciola bascae. now we will talk about
Paragonymous westermani. It is lung fluke. ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? मणिपुर. ठीक है, again we will start about definitive host. Definitive host is man. First intermediate host is snail. Second intermediate host is crab or crayfish. कैसे? Mode of transmission is ingestion. Infective form is metacarcaria. ठीक है, now let's see the picture. see, आपको कैसे आइडेंटिफाई? यू इमीडिएटली आपको जब भी ये क्रैब दिखाई देगा, देखो क्रैब इज सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल. क्रैब जैसे भी सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट में दिखाई दे दिया, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज पैरागोनिमस वेस्टरमैनी. ठीक है, स्नेल तो है ही आपको, पर क्रैब इज द आइडेंटिफाइंग फैक्टर. ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है? क्लिनिकल फीचर्स, पल्मोनरी फीचर्स आता है. ठीक है, और सेरेब्रल और क्यूटेनस फीचर्स भी होता है. तो पल्मोनरी में क्या होता है? गोल्डन ब्राउन स्पूटम. ठीक है, एंड पल्मोनरी में सिस्ट फॉर्मेशन ऑल्सो ऑकर्स और ग्रेनुलोमा भी फॉर्म होता है. ठीक है, फाइन. So we are done with Paragonymous westermani also. Now we will talk about Clonorchis sinensis. This is known as Oriental or Chinese liver fluke. ठीक है, C for Chinese. इसमें क्या होता है? Fish is the secondary intermediate host. इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स थोड़ा याद रखना है इसमें. क्लिनिकल फीचर्स, इट कॉजेस cholangitis and cholangiocarcinoma. cholangitis क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट. ठीक है, और इसका जो कैंसर होता है cholangiocarcinoma. ठीक है, नाउ लिटिल बिट अबाउट इंटेस्टाइनल फ्लूक्स. हमने लिवर फ्लूक्स सारा बात किया. अदर फ्लूक्स वी टॉक ब्लड फ्लूक आपका. now we will talk about intestinal fluke. तो what are the names सारा सिर्फ याद रखना है हमको. Fasciolopsis, this one not fasciola, Fasciolopsis bascae. then heterophyes, then metagonymous Yokogawai, then Watsoni, and Echinostoma. One more is there, Gastrodiscoides hominis, that is of large intestine. These are of small intestine. One we have of large intestine, that is Gastrodiscoides hominis. ठीक है, now last fluke we will talk about is Fasciolopsis bascae. So this is the largest trematode infecting human. Smallest क्या है? Smallest is heterophyes. ठीक है, so this is all for our topic of trematodes. Drug of choice याद रखना है. Drug of choice is Praziquantel except
आपका फेशियोला हेपाटिका, जिसमें वी यूज ट्राइक्लाबेंडाजोल. Okay, so this is all for the topic of trematodes. I hope you liked my presentation, and I know I had lot to improve. I hope in the coming lectures I will be able to make a much better presentation for you. This presentation I made in a little bit of hurry, so some points may be missed out. Please do go through the textbook, that is Apurva Shastri for your NEET PG preparation, NEET MDS preparation. Apurva Shastri is the gold standard book. You can go through that, or if some mistakes are there, please do get yourself corrected through the book. Okay, so thank you very much for patiently listening to me. See you in the next class. Thank you.